This is part 3 of this Linux video series और इस पार्ट के अंदर हम फाइल सिस्टम नेविगेशन कवर करेंगे. The first command we'll discuss is the mkdir command और mkdir command के ज़रिए हम directories जो है create कर सकते हैं. So let's go to our terminal and let's take the listing, and now we can see we have a few directories over here and few files that we have created in the last part. So let's create a new directory and we'll name it, we'll create it using the mkdir command, and then we'll name it as dir1. And now if we press enter and retake the listing, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि we have a new directory named dir1. Next command is the cd command. तो cd का मतलब हुआ change directory. तो अभी हम इस वक्त अपनी home directory के अंदर हैं. If we wanted to move to the dir1 directory here, तो we'll type cd dir1, और अब आप ये टर्मिनल के ऊपर भी देख सकते हैं कि it has changed the prompt, so it is showing me that I am inside the dir1 directory. So let's confirm it by using the pwd command that we have covered in the first part. So let's type pwd, press enter, और अब ये बता रहा है कि I am inside the dir1 directory. अब अगर मुझे अपनी home directory में वापस जाना है तो I can use cd, and there is a shortcut क्योंकि इसकी जो home directory है that's just one directory above. तो cd dot dot जब भी मैं type करता हूँ, so that means I wanted to go one directory up. So now if we type cd dot dot, then press enter, so I am back to my home directory again. And now let's clear the screen, retake the listing, and we are back to where we were before. Next command is the rm command, or remove file or directory. So let's try to remove this file2.txt first. So we'll just type rm and then we'll type the name of the file, that's file2.txt, and press enter, and now we take the listing. file2 जो है वो डिलीट हो गई है. अब इसमें साइड नोट की आपको बात बताता जाऊँ. लिनक्स में स्पेशली टर्मिनल से अगर आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. जैसा कि आपके विंडोज़ में या मैक में अगर आप फाइल डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश बिन में चली जाती है. लिनक्स कमांड लाइन से ऐसा नहीं होता. वंस यू हैव डिलीटेड द फाइल यूजिंग द कमांड लाइन, स्पेशली यूजिंग द rm कमांड, तो वो फाइल जो है अब वो इरेज हो गई है. You can get it back by using some specialized utilities, but it's not easily recoverable. So we have removed the file here. Now we'll try to remove the directory dir1. So we'll type the same command rm, and then we'll type dir1, and then we pressed enter. और फिर अब ये मैसेज दिखा रहा है कि dir1 is a directory and we cannot remove it using the rm command this way. तो इसके लिए फिर हमें एक फ्लैग यूज़ करना पड़ता है. That flag is the -r flag. So now if we type rm -r, and then we'll just retype the name of the dir1 here and press enter, तो अभी कोई एरर मैसेज नहीं आया, तो इसका मतलब है कि डायरेक्टरी डिलीट हो गई है. तो अगर अब हम इसकी दोबारा से लिस्टिंग लेते हैं यूजिंग द ls कमांड, तो आप देख सकते हैं कि dir1 is now gone. So let's clear the screen. Next command is the copy command. So let's take the listing here once again, and अगर मुझे let's create the dir1 directory again using the mkdir command, and then we'll type dir1. तो अब जो है कोई error message नहीं आया, तो most probably ये dir1 directory जो है create हो गई होगी. So let's check it using the ls command. ls enter. तो अब हमारे पास जो है dir1 directory create हो गई है. So let's copy this file1.txt from the home folder or home directory to the dir1 directory here. So we'll
type the copy command cp, and then we'll type the name of the file, file1.txt, and then we'll type the destination. Destination means कि जहाँ पे आपको file copy करनी है, and in this case it's the dir1 directory here. So we can type dir1 and then press enter. कोई error message नहीं आया, that means the operation is successful. So let's take the listing here again. तो अभी यहाँ पे कोई में change नज़र नहीं आ रही है. So let's change into dir1 and see if the file is there or not. So we'll do cd dir1, press enter, and then we'll take the listing here, and we can see कि यहाँ पे file1.txt exist करती है. So we have copied the file from the home directory to dir1 directory here. And now let's remove the file using the rm command, and we'll type the name of the file, and then we retake the listing, और अब वो file जो है dir1 में से remove हो गई है. Let's go back to our home directory, clear the screen, take the listing again, and now we are back to where we started. Next command that we'll cover is the move command. तो जब हमने कोई file move करनी है या directory move करनी है from one place to another one, we use the mv over the move command. So let's try to move this file1.txt to this dir1 directory here. तो move और copy में फ़र्क ये होता है कि copy जो है, इस file की copy जो है वो यहाँ पे move करती है dir1 में, लेकिन जब हम move command यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे इस पूरी फाइल 1 को यहाँ से हटा के dir1 में मूव कर देती है, और फिर ये होम डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल 1 अभी आपको नज़र आ रही है, ये मूव ऑपरेशन के बाद आपको नज़र नहीं आएगी. तो लेट्स मूव द फाइल यूजिंग द mv कमांड, mv, and then we'll type the name of the file, file1.txt, and then we'll type the destination, that's dir1 here. So we'll type dir1, press enter, and now we'll take the listing again, और अब यहाँ पे हमें file 1 जो है वो नज़र नहीं आ रही है. तो let's go to dir1 directory, and take the listing, और अब यहाँ पे हमें जो है file 1 जो है वो नज़र आ रही है. So that means we have moved the file from the home directory to this dir1 directory here. अब अगर हमें होम डायरेक्टरी में वापस जाना है तो वी वर यूजिंग द डॉट डॉट नोटेशन बिफोर. इसका एक और शॉर्टकट भी है. नो मैटर वेयर यू आर इन लिनक्स, ऑन द टर्मिनल यू कैन जस्ट टाइप cd and the tilde sign afterwards and press enter. You will always navigate to your home directory. Now let's clear the screen and retake the listing, or we now have the listing of the home directory here. अभी हमने जो copy operation हमने किया था, और then we have done the move operation. इसके अंदर हमने फाइल को कॉपी और मूव किया था, बट हमने डायरेक्टरी को कॉपी या मूव नहीं किया. तो let's create two directories here using the mkdir command, and then we'll type the name of the directories here, dir2, and then we'll also type dir3. तो अगर हमने मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट करनी हो तो वी कैन जस्ट सेपरेट देयर नेम्स बाय स्पेस, और वो मल्टीपल डायरेक्टरीज जो हैं एक ही कमांड से क्रिएट हो जाती हैं. So let's press enter here, and now retake the listing, or now we have two directories, dir2 and dir3. Now we'll copy dir2 from the home directory to dir1 directory. So we can do cp dir2, and then we'll provide the destination dir1, press enter, and it doesn't work. अब वो यहाँ पे देखें कि आपको हिंट भी प्रोवाइड कर रहा है -r के ज़रिए, तो you have to use the -r flag here. So we'll do cp -r, and then we'll type the same command dir2, and then we'll type the destination dir1, press enter, और अब कोई एरर मैसेज नहीं आया,
तो इसका मतलब है कि वो में कॉपी हो गई है. तो let's check it by navigating to dir1. So we do cd dir1, press enter, and now take the listing of dir1. और अब यहाँ पे हमें dir2 की डायरेक्टरी नज़र आ रही है. So that copy operation was successful. Now let's move into our home directory again, clear the screen, take the listing, and we are back to where we were. So now we'll try to move dir3 directory from my home directory to dir1. So we'll type mv dir3 and the destination dir1, and then we'll press enter. तो आपको error message नहीं आया, that means it's successful. So let's take the listing. तो हमने move operation किया था, so dir3 is not in the home directory anymore. It is in the dir1 directory here. So let's navigate to dir1, press enter, and take the listing here, and we can see that dir3 is in now dir1 directory. So that's the end of part 3. Thanks for watching. I'll see you in the next part.